नमस्कार आउ एक नूतन वीडियो को आपको स्वागत। देखो आज जो वीडियो पर आम चर्चा करुचे जो टॉपिक उपर तो से आपंकर पॉलिटिकल साइंस टॉपिक उपर आम डिस्कशन करवा जोटा कि आप जानते पॉलिटिकल साइंस आमर ऑलरेडी क्लास जोटा साइलेंट फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन से ऑलरेडी कवर हो सारी किंतु एटा आपन नियारा टॉपिक रही कि देखो आपंकर सबू एग्जाम रे सबू कॉम्पिटिटिव हो कि जेकोसी एग्जाम हो आप जानते पॉलिटिकल साइंस गोटे एमती टॉपिक जोटा कि बहुत इंपोर्टेंट रोचे तो ये आपंकर सबूतक जिते विषय रहा तार एमसीक्यू आपको टॉपिक वाइज मु आनिक देवी जोटा कि आपण बहुत इंपोर्टेंट रहो जो टॉपिक गुड़ा कि आपण जदि यही क्वेश्चन गुड़ाक प्रैक्टिस कर जेकोसी एग्जाम रहा आप क्वेश्चन पाइबे ही पाइबे। तो वीडियो स्टार्ट करने पूर्व आपको रिक्वेस्ट करी कि आम चैनल को सब्सक्राइब करूँ जहाँद्वारा कि आमको आहरी मोटिवेशन मिले आम भल भल वीडियो भल भल टॉपिक रू वीडियो आणबू जहाँफल कि आप कॉम्पिटिटिव रे आपन को आहरी तैयार करने आउ टे सहज हो। तो दयाकोरी चैनल को सब्सक्राइब करूँ पाखे थी बेल आइकन को दबाई दिंतु जहाँफल कि आपको जेकोसी वीडियो अपलोड हम सर्वप्रथम नोटिफिकेशन मिल जाव। तो देखो आज आम स्टार्ट करवा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो देखो ये जो आपण क्वेश्चन गुड़ा कणा यहाँ हूँ आपंकर गोटे बुक जोटा कि एम लक्ष्मीकांत बुक जोटा कि आप जानते समस्ते पॉलिटिकल साइंस रे जेकोसी कॉम्पिटिटिव हो आप जब प्रिफर कर आपंकर मिनिमम बुकटी आपंकर एम लक्ष्मीकांत बुक समस्ते पढ़ती। तो यही बुक रू ए क्वेश्चन गुड़ा सब कलेक्ट कर ए टू जेड पर्यंत आपंकर जिते टॉपिक रही तो सही टॉपिक रे सब आपको एमसीक्यू मिल जाव जब आप बही पढ़ी ये वीडियो टी रिवाइज कर एग्जाम रे बसवार जो फियर से संपूर्ण कमी जीव। क्वेश्चन नंबर 1 ईस्ट इंडिया कंपनी गॉट द एक्सक्लूसिव राइट ऑफ ट्रेडिंग इन इंडिया अंडर ए चार्टर गारंटेड बाय क्वीन एलिजाबेथ इन व्हिच ईयर 1559 1600 1601 1602। तो सठिक ऑप्शन टी आप जानते बी 1600। क्वेश्चन नंबर 2 इन 1765 the East India Company got Diwani right in Bengal, Bihar and Odisha. What is the meaning of Diwani right? तो Diwani right रो meaning कौन? Options are right over revenue only, right over civil justice only, right over revenue and civil justice only, right over revenue, criminal justice and civil justice only. तो ये आपको देखो सठिक ऑप्शन हूँ आपंकर ऑप्शन सी राइट ओवर रेवेन्यू एंड सिविल जस्टिस ओनली। हु वाज first to struggle the need for a constitution assembly after independence? Options are मोतीलाल नेहरू, M.N. Roy, B.G. तिलक, महात्मा गांधी। तो सठिक ऑप्शन टी हूँ आपंकर ऑप्शन बी M.N. Roy। Which one is not a feature of Regulating Act 1773? It was the first step taken by the British to control and regulate the affair of East India Company in India. First time the British recognized the political and administrative function of the company. The Regulating Act 1773 laid down the functions of central administration in India. It provided for the establishment of a Supreme Court at Madras. तो सठिक ऑप्शन टी आप देखो ये हूँ आपंकर ऑप्शन डी इट प्रोवाइड फॉर द एस्टाब्लिशमेंट ऑफ अ सुप्रीम कोर्ट एट मद्रास। तो which one is not a feature of Regulating Act 1773? Options are Board of Control to manage the political affair were established, Board of Director was created to report the revenue, civil and military affair in India. It designated the Governor of Bengal as Governor General of Bengal and Governors of Bengal and Madras subordinated to Governor General of Bengal. Last option, it prohibited the servant of the company from engaging in any private trade or accepting present from natives. तो देखो सठिक ऑप्शन हूँ आपंकर ए बोर्ड ऑफ कंट्रोल टू मैनेज द पॉलिटिकल अफेयर वाज एस्टाब्लिश। ओके व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एक्शन इज आल्सो कॉल्ड द एक्ट ऑफ सेटलमेंट? रेगुलेटिंग एक्ट 1773, अमेंडिंग एक्ट 1781, पिट्स एक्ट 1784, चार्टर्ड एक्ट 1833। तो सठिक ऑप्शन हूँ आपंकर ऑप्शन अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781। यहाँ आप देखो यहाँ हूँ एक्ट ऑफ सेटलमेंट जोटा कि 1781 आसला। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर ऑफ फिट्स इंडिया एक्ट? फिट्स इंडिया एक्ट जोटा कि 1784 मसीह होता। इट डिस्ट्रीब्यूट्स
between the commercial and political function of the company. A new board of control was established to manage the political affair. It empowered the board of control to survive and direct all operation of civil and military government and revenue of the British possession in India. Option C, it establishes system of double government. Option D, first time it recognize the political and administrative function of the company. तो सठिक ऑप्शन टी होची आपन को एथरे ऑप्शन डी, जोटा कि आपन फर्स्ट टाइम इट रिकॉग्नाइज द पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन ऑफ द कंपनी. Which of the following are important fact about Peace India Act 1784? The first time the company territories in India were called the British possession in India. Under this act, British government was given supreme control over company affair and its administration in India. It was the first step toward centralization in British India. Now both A and B. तो ऑप्शन टी होची आपनकर सठिक ऑप्शन टी होची आपनकर ऑप्शन डी, जोटा कि both A and B. Which act was consider the final step toward centralization in British India? Options are Regulating Act 1773, Peace India Act 1784, Charter Act 1833, Charter Act 1853. तो सठिक ऑप्शन टी होची आपनकर ऑप्शन सी, Charter Act 1833. Which of the following is not a feature of a Charter Act 1833? It made the Governor General of Bengal the Governor General of India. Lord William Bentinck was the first Governor General of India. The act deprived the legislative power of Bombay, Bengal and Madras. Exclusive legislative power of British India were given to Governor General of India. The सठिक आंसर टी होबो ऑप्शन सी. Which of the following was the first Governor General of Bengal? First Governor General of Bengal किए? Warren Hastings, William Bentinck, Lord Canning, Lord Dalhousie. तो सठिक ऑप्शन टी आपनकर होचे ऑप्शन ए, वारेन हेस्टिंग. तो देखो वारेन हेस्टिंग जे रहले से होचन प्रथम गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल हैला. फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल के रहले वारेन हेस्टिंग, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल. किंतु विलियम बेंटिंक कोन ना फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया. विलियम बेंटिंक होची फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया. लॉर्ड कैनिंग कोन, लॉर्ड कैनिंग होचन फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया. ओके. Which of the following was the first Governor General of India? तो आसीगला क्वेश्चन फर्स्ट गवर्नर जनरल की एटी ऑप्शन अछि आपनकर वारेन हेस्टिंग, विलियम बेंटिंक, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड डलहाउसी. तो ऑप्शन टी होछि आपनकर बी, विलियम बेंटिंक, जोटा ऑलरेडी आपन कहि साछि. Which of the following was the last Governor General of India? लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की देखो तो आपनकर जेते लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया पचारछु सेतबे आपन मन पके पड़िबो जेते लॉर्ड कैनिंग कोन हले आपनकर प्रथम वाइसरॉय. तो प्रथम वाइसरॉय हेले लॉर्ड कैनिंग. जस्ट लॉर्ड कैनिंग बिफोर भी लॉर्ड कैनिंग थिले कोन ना गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया. तो लॉर्ड कैनिंग ही गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया लास्ट होथिले, तांको ही परिवर्तन करिके कोन करा गला ना वाइसरॉय करा गला. तो लॉर्ड कैनिंग ही आपनकर कोन लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया. लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया होचन लॉर्ड कैनिंग और फर्स्ट वाइसरॉय होचन लॉर्ड कैनिंग. ओके. व्हिच ऑफ द following was the first viceroy of India? पुन से क्वेश्चन ऑप्शंस आर वारेन हेस्टिंग, विलियम बेंटिंक, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड डलहाउसी. आपन ऑलरेडी जणै सारछि एथरे सठिक ऑप्शन टी होछि सी, लॉर्ड कैनिंग. ओके. Which of the following activities for the first time the legislative and executive function of the Governor General Council were spread out? केतबेले एटा सेपरेट हैला. तो देखो ऑप्शंस होछि पीस इंडिया एक्ट 1784, चार्टर एक्ट ऑफ 1833, चार्टर एक्ट ऑफ 1853, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1857. तो सठिक ऑप्शन टी होछि आपनकर ऑप्शन सी, चार्टर एक्ट 1853. Which of the following is not the feature of a Charter Act 1853? Not the feature of a Charter Act. तो सबु बेले क्वेश्चन टाको मन रखुतबे नॉट दोछि कि फीचर दोछि. तो सेटा आपण देखिया दरकार जेते नॉट दोछि तो आपण भल्लो की जानिया दरकार तीनोटी जो चारटी ऑप्शन थिबो तीनोटी ऑप्शन होथिबो कोन सेही चार्टर एक्ट अंडर रे थिबा आ गोटी ऑप्शन जोटा थिबो टिके डिफरेंट थिबो सेही थ्रू आपण क्वेश्चन को आंसर करिया मार्क कर देबे. तो एठी आपण देखंतु फर्स्ट ऑप्शन रे कोन होछि इट इंट्रोड्यूस एन ओपन कॉम्पिटिटिव सिस्टम ऑफ सिलेक्शन एंड रिक्रूटमेंट ऑफ सिविल सर्वेंट. ठीक कथा, सिविल सर्वेंट को मेटा रिक्रूटमेंट कला. It extended the company rule but did not specify the any particular time. ठीक कथा. It introduced first time local representation in India Central Legislative Council. ठीक, एटा Central Legislative Council को रिक्वायरमेंट करछि एई चार्टर एक्ट कोडा 1853.
इट एबोलिश द कमर्शियल बॉडी एंड कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी ना सठिक ऑप्शन टी कौन ना डी ओके द मैकूली कमिटी वाज अपॉइंटेड इन 1854 and it is related to the options are education reform, social reform, Indian civil service reform, political reform. तो इंडियन सिविल सर्विस रिफॉर्म को मैकूली कमिटी ही अपॉइंट कराइथिला 1854 रे तो सठिक ऑप्शन टी होची आपनकर ऑप्शन सी तो गोटे कथा आपनको एठी आ गोटे क्वेश्चन मन पड़े सिविल सर्वेंट रो जनक बोली कहा कुआ जाय आपण मन रखा दरकार सिविल सर्वेंट रो जनक बोली हम कहा कहूचे ना लॉर्ड कॉर्नवालिस मन रखंतु लॉर्ड कॉर्नवालिस हम कहूचे लॉर्ड कॉर्नवालिस कौन थे ना ये थिले किए ना जितेबाला फास्ट आपणकर हेस्टिंग विलियम हेस्टिंग जितेबाला आपणकर फास्ट गवर्नर जनरल हेले गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल केतेबाला होचंती 1772 रु नै कि आपणकर 1785 पर्यंत के रहिले इठी आपणकर रहिले लॉर्ड विलियम हेस्टिंग पर जस्ट आफ्टर रे किए आसुचंती आपणकर आसुचंती होची लॉर्ड कॉर्नवालिस किए लॉर्ड कॉर्नवालिस आसुचंती 1786 रु लेकी 1793 पर्यंत किए लॉर्ड कॉर्नवालिस रे 1786 रु लेकी 1793 पर्यंत ओके तो एथिरे आपनकर सठिक ऑप्शन टी होची ऑप्शन सी इंडियन सिविल सर्विस व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1858 ऑप्शंस आर इट चेंज द डेजिग्नेशन ऑफ गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया टू वाइसरॉय ऑफ इंडिया इट एबोलिश द बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड कोर्ट ऑफ डायरेक्टर एंड एंडेड द डबल गवर्नमेंट इट एस्टैब्लिश द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट विथ 25 मेंबर काउंसिल और नॉन ऑफ दी एच तो सठिक ऑप्शन टी होची आपनकर ऑप्शन सी इट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट मेड द फर्स्ट अटेम्प्ट टू एसोसिएट इंडिया विथ द लॉ मेकिंग प्रोसेस ऑप्शंस आर चार्टर एक्ट 1853 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 द इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 तो सठिक ऑप्शन टी होची आपनकर ऑप्शन सी एठी इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 एटा को टोटली आपन डिटेल्स रे पढिया पड़ियो डिटेल्स रे पढले आपन निजे निजे करि पारिबे आंसर एथिले आपनकर 20 टी एमसीक्यू जोटा कि आपनकर हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को नेकी पॉलिटिकल साइंस रो तो आगो को नेक्स्ट आपनको अन्य पार्ट गुडा को मिलिबा आ धीरे धीरे सब आमे कवर करिया ए टू जेड पर्यंत आपन पॉलिटिकल साइंस जिते क्वेश्चन बनबे आमे कवर करिया मैक्सिमम देखो जे कौन से एग्जाम रे आपनकर पॉलिटिकल साइंस रो क्वेश्चन बनिबो आ सेथिरे आपनकर एई रिलेटेड क्वेश्चन ही आपनको आसीथिबो तो चैनल को सब्सक्राइब करंतु थैंक यू।